हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स की। हम जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के सामने, दैट प्रॉब्लम इज टाइम। बिकॉज इन एवरी सिंगल एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और टाइम बहुत ही कम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट यू इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा है तो ये सिर्फ मैथ्स में हेल्प नहीं करेगी, इट विल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी, योर डिसीजन मेकिंग स्पीड। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो इस वीडियो में हमारे जो आज के टारगेट हैं, इट व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, वी लर्न close to 50 new squares and then we'll learn finding out the cube root. Then we'll learn how to solve a mixed fraction. This is first of the video of this series of calculation techniques. There will be total 4 videos. So once you will cover the content of this topic, I'll release the next video as soon as possible. So let's begin. So first we'll learn how to find out a square of a number which ends with a 5, means the number which has unit digit 5. For example, 35. Suppose we want to find out the square of 35. So in this case, हमें क्या करना होता है? Leave this 5. Now, अभी जो rest जो number like 3 is here, multiply this to the next number or next integer. 3 into 4 is 12, and then 5 square, which is 25. Is that clear? Once again, let's see, the number is 45. So what we'll do is 4 के बाद next number आएगा हमारा 5. 4 into 5 is 20, and then 5 square is 25. Is that clear? Like 65. So next number to the 6 is 7. 6 into 7 is 42, and then 5 square is 25. 4 to 25. आप कोशिश करें कि ये जो हम लिख रहे हैं इसको ना लिखें, सिर्फ नंबर के बाद डायरेक्ट स्क्वायर पर हम जाएं। हमें स्क्वायर चाहिए 95, तो 9 का नेक्स्ट नंबर होगा 10. 9 into 10 होगा 90, and then 5 square is 25. Okay, it's 9025. कोशिश करें कि हम डिजिट्स में ही बात करें, ना कि नंबर्स में। It also work with 3 digit numbers. Like अगर मुझे स्क्वायर चाहिए 135 का, तो मुझे 13 के बाद नेक्स्ट नंबर है 14. 13 into 14 is 182, and then 5 square is 25. Okay, so this technique is very helpful to finding out the square of any number which ends with 5. Okay, I hope this is clear to you all. And now try to practice this orally. हमको इसको लिखकर नहीं करना है, क्योंकि अगर लिखकर करेंगे तो कोई यूज नहीं है, हमें ओरली करना है. And this is first step of learning. Okay, let's move on to the next series. So finding the square of numbers from 50 to 60. Okay, so 50 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? 5 square is 25 and 0 square is 00. Okay, now let's see the square of 51. How to solve this? Just look at carefully. 5 square, which is 25, plus 1. तो हमें क्या करना है? 5 square and then add this number 1. 25 plus 1 is 26, and then 1 square. 1 square 1 होता है, but हमें यहाँ पर 2 digit के फॉर्म में लिखना है. That's why we'll write 1 as 0 1. Is that clear? हम 1 को लिखेंगे कैसे? 0 1. Let's see another number. Let's see square of 53. तो क्या करेंगे? 5 square 25 plus 3 is 28, and then 3 square is 0 9. Is that clear? Let's see another number. 56. कितना हो जाएगा? 5 square 25
plus 6, 31, and then 6 square, 36. Is that clear? So for any number which lies from 50 to 59, okay, हम आगे भी कर सकते हैं. We'll learn those things in the next video. अभी आप basic पर focus कीजिए. Just from number 50 to 60. Need not to go beyond that. Okay. Let's see. Find out the square of 59. 59 में कितना हो जाएगा? 5 square 25 plus 9 square. Sorry, 25 plus 9. 25 5 plus 9 हो जाएगा हमारा 34. And then 9 square is 81. So 3481. This is the square of 59. Is that clear? So by using this, we can find out the square of any number which range between 50 to 60. Okay, next let's learn how to find out the square from 50 to 40. But yes, आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए. Once you have done learn the one technique, like आपने पहले 50 से 60 तक सीख लिया है, अब आप सारे स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, orally कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, and then move on to the next part. Okay. Okay. Now अभी हमें निकालना है स्क्वायर फ्रॉम 40 to 50. Basically 50 to 40. Why I'm saying 50 to 40? Because हमारे पास यहाँ पर हम रेफरेंस 50 ले रहे हैं और उसी से हम सारे स्क्वायर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. सो हमने अभी कैलकुलेट किया था स्क्वायर 51 का. 51 था हमारा 50 प्लस 1. तो हमने इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया था? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 एंड 1 का स्क्वायर 1 है. 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो हमने लिखा था इसको 01. Now let's see how to find out the square of 49. 49 हमारा कितना होगा? 49 is 50 minus 1. Is that clear? So 49 is 50 minus 1. तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना चाहिए? 5 square 25 minus 1. पहले 51 में प्लस 1 था तो हमने प्लस किया था. यहाँ पर 49 में माइनस 1 है तो हो जाएगा 25 minus 1 is 24 and then 1 square is 1 which is again 01. ठीक है ना? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, सो नीड नॉट टू वरी. लेट्स चेक अनदर नंबर 48. 48 कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 minus 2. तो कैसे निकालेंगे हम इसका स्क्वायर? 25 minus 2. 5 square 25 minus 2. It will becomes 23 and finally 2 square which is 04. Is that clear to all? Let's calculate the square of another number. 44. Okay, now you have to do one thing. ये जो हमने सेकंड वाला जो स्टेप लिखा था 50 minus 1 और 50 minus 2, इसको आप मेंटली कैलकुलेट करें, इसको आप लिखें नहीं, ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप में आप लिखकर इसको एक बार कर लें, लाइक हमने एक दो नंबर लिख लिया, निकाल लिया. देन सेकंड स्टेप इज व्हाट? हमको ये मिडिल स्टेप स्किप करना है. तो हमें पता है 44 is 50 minus 6. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 25 5 square 25 minus 6 which is 19. Now कितना माइनस किया था हमने? 6 माइनस किया था तो 6 square 36. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको इनिशियली करने में, बट दिस इज व्हाट द स्टेप ऑफ लर्निंग. ओके, हमारा टारगेट सिर्फ यही स्क्वायर नहीं है, हमें बाकी सारे नंबर्स के स्क्वायर भी ओरली कैलकुलेट करना सीखना है. सो दिस इज स्टेप ऑफ लर्निंग. ओके, लेट्स सी अनदर नंबर 43. 43 is 50 minus 7. तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 minus 7 which is 18 and then 7 square is 49. Okay, 42 square कितना हो जाएगा? 25 minus 8 which is 17 and then 8 square is 64. Is that clear? So this is the way we can calculate the square of number belonging to range 50 to 40. Okay, I hope this is clear to all. Okay, now the next series is from 100 to 110. Okay,
So we know the square of 100 is 1. 100 is 100. Square will be square of 1 is 1. Square of 0 is 00. And further square of 0 is 00. So this is the square of 100, 1, 00 and 00. Please leave the habits of saying 10,000. Make the number smaller. It will help out to calculate easily. Let's see next number 101. How to calculate the square of 101? So first हमको ये देखना होगा कि ये जो गिवन नंबर है हमारे पास, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है. तो 101 is 1 more than 100. ठीक है ना, ये 100 से 1 ज्यादा है तो हमें इस नंबर में 1 ऐड करना हो जाएगा. ठीक है, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड करना है. सो नाउ इट विल बिकम्स 102. हमें सिर्फ इसी नंबर में ऐड करना है. ये नंबर 100 से 1 ज्यादा था इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया 102. तो जो 1 ऐड किया था उसी का स्क्वायर विच इज 1. 2 डिजिट लिखना है तो 01. क्लियर है? लेट्स सी अनदर नंबर. तो 102. ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है तो इसी नंबर में 2 ऐड करना है. तो अब कितना हो जाएगा ये 104 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 04. Is that clear? Let's see one more number. 107. ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? क्लियरली ये नंबर 100 से 7 ज्यादा है तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 114 and then 7 square which is 49. Okay, I hope this is clear to all. 106 कितना हो जाएगा स्क्वायर? So 112 and then 6 square is 36. Okay. So this is the way we can calculate the square of numbers from 100 to 110. Let's see 109. This is 9 more than 100. So we'll add 9 to this number. Now this number becomes 118 and then 9 square is 81. Okay. There is one more thing that you can do. सबसे पहले इसका डबल करो. Like 109 है तो 9 को डबल करो 18 और 9 का स्क्वायर करो 81. But I won't prefer this one because हमें सिर्फ इन नंबर्स का स्क्वायर नहीं करना. दिस इज स्टेप ऑफ लर्निंग. हमें अभी यही सीखना है कि नंबर को कितना एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा ओरली करना है. ठीक है ना. सो आई वोंट सजेस्ट दिस वन बट इफ यू वांट टू डू यू कैन डू दिस बट दिस इज द बेस्ट वे. ओके, हमें देखना है नंबर 100 से कितना ज्यादा है. जितना ज्यादा है उतना ही उसमें हमें ऐड करना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द next series. Okay, before moving to the next series I want to tell you that prep board is going to start a crash course for IPMAT 2022. In this course we'll focus not only just IPMAT, we'll also focus on SET for Symbiosis University, NPAT for Narsimon University, CUCET and other entrance examination which is going to happen for commerce stream especially or the arts stream. It does not include CLAT. Yes, especially we are focusing here on the exam which is focused on BBA or BCom type of course. In this course we'll give 4 days live session and doubt solving is available for 24/7. You put your question or doubts, our team will resolve your issues. Okay, in this course we'll provide you 100 recorded lectures. These lectures will be based upon all the topics including maths, English and reasoning, and we also provide you the practice sheet with every single lecture. And after the lecture you will have a live session in which we discuss doubts, in which we discuss 2 things. One is the basics of topic which was also covered in the recorded video, and then we'll take the doubts of the students. So in this way we'll cover each topic from every single subject. You'll get 40 full length mock test including all the entrance examination, but yes, focus will be on IPMAT and GIPMAT and DUJET and CUCET. And also you can customize these, like we'll give you multiple options that which examinations you are offering. Based on you can get the different kind of marks.
And for daily practice, you'll get close to 200 topic-wise tests, or you can see the sectional test, where you can enhance your capability, or you can see the learning in every single topics. And apart from this, you will get some special sessions on GK once in a week. GK, although we can say the most of examination में GK हमारा part नहीं है, but still GK is important, because if you are focusing IPMAT, you must know that you have to write a VAT, or you have to participate in GD, or you have to participate in interview. So in any case, if you are not, you need the current affairs or the general awareness, which is very important. And once you're done with this written examination, you have to go to the second round. So classes for the second round will also included in this. You can contact us for free demo sessions, which includes basically 3 sessions, one for maths, one for English, and one for LR. You can contact us on the given numbers. Okay, so let's continue with the next series, numbers from 100 to 90. So numbers from 100 to 90. So if we need to find out the square from 100 to 90, it's very easy, like 99. It is very similar to the previous one. Like 101 was 1 more than, and this number is 1 less than. तो more था तो हमने plus कर दिया, less है तो हम इसमें से minus कर देंगे. So this number is 1 less than 100. So subtract 1 from this number. Now it will left out 98. And now we subtracted 1. So 1 is square, which is 0. Okay, I hope it is clear to all. Let's see another number, 97. First we'll see ये number 100 से कितना कम है. So this number is 3 less than 100. So that's why we'll subtract 3 from this number. Okay, not from any other, only from this number. So 97 minus 3 is 94, and we have subtracted 3. So 3 square is 09. इसको आपका ध्यान रखना है कि जितना आपने subtract किया है आपको उसी का square लिखना है, ना कि ये यूनिट डिजिट का. समटाइम्स इट हैपेंस कि हम 7 का स्क्वायर लिख देते तो गलत हो जाएगा. ओके, 96. सो दिस नंबर इज 4 लेस देन 100. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 96, सो वी लेफ्ट आउट विद 92, एंड 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 4 का स्क्वायर 16. ओके, लेट्स सी स्क्वायर ऑफ 93. 93 इज 100 minus 7. तो हमने इसमें से 7 माइनस करना है. नाउ वी लेफ्ट विद 86. And now 7 square, which is 49. I hope this is clear to all. Let's see square of 91. 91 is 100 minus 9. Subtract 9 from 91. It is 82. And then 9, क्योंकि 9 subtract किया था तो 9 square is 81. 8281. So in this way, we can find out the square from the numbers 100 to 90. Okay, now let's see how many squares we have learned. We have learned square from 40 to 60, close to 20 squares. We have learned square from 90 to 110, which is again 20 squares. And we have already learned the finding out the square of a number which ends with 5, which is, I'm counting just 10. So we have learned 50 squares in this session. And in the next session, we'll discuss further squares and some more techniques to finding out the squares of remaining numbers and multiplication as well. Okay, let's move on to the next agenda of today's session, finding out the cube root of a perfect cube. Although this is not very much useful kind of thing, बहुत कम हमें जरूरत पड़ती है, but if you know this, it is very helpful. और बहुत ही आसानी से हम किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब है, इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर शुड बी परफेक्ट क्यूब. ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो किसी भी नंबर क्यूब रूट निकालने के लिए विच इज परफेक्ट क्यूब, वी जस्ट नो सम बेसिक्स. लाइक हमको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स क्या होते हैं, ठीक है ना. सो 1 क्यूब वी नो इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is
729। ओके, अभी अगर आपको 9 तक की क्यूब्स पता है तो इसकी हेल्प से अब आप अप टू 10 लाख तक कोई भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट आप ओरली निकाल सकते हैं। Okay, so for example, let's take a number 110592. So this is a number must be perfect cube. The first thing is important. Okay, अभी हमें इसका cube root निकालना है. Okay, so in order to find out the cube root of a given number, what we need is first just check the last digit of the number and find out कौन से digit का cube have the same last digit. So we can say 8 cube is 2. Okay, we get 2 here, so it's 8. Remove these 3 digits. Okay, we always have to remove 3 digits whatever the result is. हमको 3 digit ही remove करने हैं. Okay, now we left with 110. now see 110 किस रेंज में आता है? 64 से ज्यादा और 125 से कम है, मतलब हमारा जो नंबर होगा वो 40 से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा, तो नंबर शुड बी 48. Is that clear? Look at once again. सबसे पहले हमें क्या करना है? We look at the unit digit of the number. We also try to find कि same unit digit किस नंबर के क्यूब में आता है 1 से लेकर 9 तक. तो हमें पता चलेगा कि 8 का क्यूब has the 2 as the unit digit, which is similar to this number. So now write the 8 as the unit digit of our given number. 3 digit इसमें से हम remove कर देंगे. Now we left with number 110. ये 110 देखो 4 और 5 के बीच में आता है, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब के बीच में. So we'll write here 4, क्योंकि कोई भी नंबर 40 से 50 के बीच में आएगा तो हमें उस नंबर के लिए फर्स्ट डिजिट 10th डिजिट 4 ही लिखना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी अनदर नंबर 97336. देखते हैं इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे. सो लास्ट 3 डिजिट हम हटाने, वो हमको पता है. सबसे पहले देखते हैं 6 किस नंबर के क्यूब में आएगा. तो 6 आता है 6 के क्यूब में, तो हम लास्ट डिजिट लिखेंगे 6 और ये 3 डिजिट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. नाउ फर्दर ये फिर से 4 और 5 के बीच में ही आने वाला है, तो दिस इज 46 क्यूब. ओके, लेट्स अनदर नंबर इज 238328. Find out the cube root of this number. Okay, do it yourself. I'm giving you 10 seconds. Okay, so 8 किसके एंड में आता है? हमें पता है 8 आता है 8 के एंड में, सॉरी 2 के एंड में, तो यूनिट डिजिट will be the 2. 238. This 238 is more than 216 and less than 343. So the first digit, or you can say the 10th digit, should be 6. So 62 cube is 238328. Okay, let's check with one more number. It's 571 and 787. मुझे भी क्यूब याद नहीं है ना, so don't judge me. I'm just taking a number which is perfect cube और उसका cube root कैसे निकालना, which I'm telling you. Okay, I'm not telling you कि how to find out cube of a particular number. Okay, so here 7 हमें देखना है. 7 किसके एंड में आएगा? 3 के एंड में आने वाला है. Now remove the 3 digit. Now we left with 571. We know that 8 cube 8 और 9 के बीच में आने वाला है 571, क्योंकि ये 512 से ज्यादा है, 729 से कम है. So the first digit should be 8. So the 83 cube is 571787. So this is the way you can find out the cube root of any number which is perfect cube. Okay, तो ये हम बात कर रहे थे अब तक कि नंबर फ्रॉम 1 to 10 lakh. Okay, so 1 to 10 lakh, 10 lakh का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो ये 100 ही आने वाला है.
ओके, तो बेसिकली वन से लेके 9 तक हमें याद है, तो सारे 2 डिजिट नंबर से क्यूब रूट निकालना अभी हमने सीखा है। ठीक है, अगर आप 1 से लेके 20 तक क्यूब अगर आप याद कर लेंगे, then you can increase this range from 10 lakh to 80 lakh. Okay, तो आपकी मर्जी, अगर आपको और आगे करना है तो we can do this further as well, but for this session this is sufficient. Let's move on to the next topic for discussion today, solving a mixed fraction. Okay, although mixed fraction is very basic thing, I think everyone knows how to solve a mixed fraction. Like we have a question 5 whole 7 upon 13, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? 5 into 13 plus 7 upon 13, which is 72 upon 13. So everyone knows this, how to solve this. Okay, तो फिर इसमें नया क्या है? Okay, now let's see. अच्छा, ये कहाँ काम में आता है? Especially when we are solving question based on time and work, LCM, HCF, and also if we are solving question based on clock, तब मिक्स फ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं. दिस इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. लेट मी गिव यू हाउ. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ नंबर ओके, अभी हमको इसको सॉल्व करना है. ओके, सो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 537, लाइक दिस इज द प्रोसेस. 537 into 13 plus 6 divided by 13 minus 421 into 11 plus 5 divided by 11. अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये भी एक दो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएंगे, इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. इसको फर्दर अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So you can understand this process is very lengthy and time taking. So we do not have this kind of luxury of time. We have very limited amount of time. So let's try to understand a very basics. For example, अगर आपके पास लिखा हुआ है ऐसे x y without any sign, what we understand by this? We understand this x into y. यही समझते हैं हम. Okay. अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 3, तो what we understand by this? We understand by this as 2 into 10 plus 3. यहाँ पर हम इसको 2 into 3 नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर क्या समझते हैं इसको? 2 into 10 plus 3, that is why we call it 23. Okay. Similarly, अगर मान लो मेरे पास लिखा होगा CAT cat, तो हम यहाँ पर इसका मतलब नहीं समझेंगे कि मल्टीप्लाई है या इस टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म है. We'll clearly understand this meaning as cat, a word means Billy. Okay. So अभी सिमिलरली, तो जब हमारे पास एक इंटीजर और फ्रैक्शन साथ साथ लिखे होते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल. अभी हमने सॉल्व किया था 5 होल 7 अपॉन 13, इसकी वैल्यू आई थी 72 अपॉन 13. ओके, लेट्स सॉल्व अनदर वन, 5 प्लस 7 अपॉन 13. कैसे सॉल्व करेंगे? 5 के अपॉन में 1 लेंगे, 13 and 1 कैल्शियम, 13 आ जाएगा, 13 5 just 65 and plus 7 which is 72 upon 13. Same. Okay, is it a coincidence or is it true for all the time? Okay, so whenever we write an integer and a fraction side by side, it means by default they are basically we are adding that. Okay, so अभी अगर हमारे पास क्वेश्चन है 537 and 6 upon 13 minus 421 5 upon 11, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, हम इसमें इंटीजर पार्ट्स अलग लेंगे. 537 minus 421 and plus 6 upon 13 minus 5 upon 11. इंटीजर पार्ट्स को अलग सॉल्व कर लेंगे, इट्स 116, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे, 66 minus 65 1 upon 143. ये अभी प्लस में है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस साइन रिमूव करके भी, क्योंकि यही इसका मतलब होता है. इट्स 143. इज दैट क्लियर टू ऑल?
हमारे पास जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसका मतलब है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो इंटीजर इंटीजर्स को अलग सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शंस को अलग सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको एक साथ लिख लेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप वीडियो को देखें। इसके बाद अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन टेक्निक सीखने के लिए once you're done with this, please message us or comment on this video so that I'll get to know that you like this video and you want to learn more. I'll upload the next video. Thank you very much.